झाला की बातचीत झाला ना. आता तो येईल. मैंने तरफ देखो. मला पण तसा हार्ट काढून देईल. आई वॉन्ट योर अटेंशन. अभी कोई भी कुछ भी बोलेगा नहीं, कोई भी कुछ भी बोलेगी भी नहीं. वेल वेल वेल. One. One. बस आता बोलू नका. Well. We had the first two methods of presentation of the primary data, I mean presentation of any data. For that matter, the first was the method of textual presentation. Second was the method of tabulation. मला गुलाबी घालायला सांगितलं, तुम्ही सगळे कोणीच काही घातलं नाही. पिंक आहे का? काय? यू हॅव टू बी यंग ॲट हार्ट, यू नो. एखादी गोष्ट करायची तर ती सिन्सिअरलीच करायची. नो कॉम्प्रोमाइज. काय? कुठे? बघ की मी काय करू. Well, look at me. We are moving on to. तो हा कुठे गेला? काय ना, कुठे गेला तो? Look, that is the diagrammatic representation or diagrammatic presentation. Diagrammatic presentation. तभी तुम्ही कसं बघणार आता? Change the places ना? दिसतंय का तिथून? Change the place, na? Take chairs and sit there or here. If you don't have a chair, I will have to take care. नाही की नाही? माझं काय म्हणणं आहे की आज पिंक ठरलं होतं की नाही, मग तुम्ही ते फॉलो करायला पाहिजे. सिन्सिअरली फॉलो करायचं एखादी गोष्ट ठरवली की, इन अकॅडमिक्स as well as in extracurricular. जो जो जब जब करना है सो सो तब तब करना ही है.
तू जा ना तिकडे जाऊन बस ना. ठीक आहे तिकडे जागा आहेत ना. Hey, Arey, hey, bada, if you cannot see the screen, you better change the places. There are places vacant in front of the screens. Make a space for yourself. You be comfortable. You take, you protect your interest. Diagrammatic representation. एक ते जरा फॅन बारीक कर. नाही हा. Don't waste time, please. Okay, look at me, all set? Come on. Diagrammatic presentation. The first feature of that, not much accurate. Not much accurate. Why not much accurate? Because we plot the point, na? ए बाळाची आई इकडे बघ ना. बाबा कुठे गेला? Not much accurate because we plot the point and point cannot be plotted to the accuracy. We plot it approximately at that point. So not much accurate, but the biggest advantage of that is comparison is possible. Comparison is possible. And the third one is long-term trend can be seen. Long-term trend can be seen. Now this long-term trend could not be seen in the tabular method, but it can be seen here, but it is not that accurate. Now the first type of diagram is the line diagram. And this line diagram is also called the histogram. Now remember, histogram is different, historiogram is different. So line diagram is also called the historiogram. But depending upon how many time series are there and what is the condition pertaining to that, we have the first one is the simple line diagram. Simple line diagram. We have the simple line diagram. And the only possible question here is when do we use? Whenever there is only one time series. When there is only one time series, not having the large variations. And the second one is, this is not that important, but you must know, x-axis will represent the time and y-axis will represent the factor under consideration. Now that factor could be, say, production, prices, whatever factor you are studying, imports, exports, is foreign trade,
You have to be serious, huh? Please. Fun ke waqt fun. You can't have a compromise with even a single mark in this section. You will find people getting 39 and failing. You know, I told you many times these things. Many years back, say 1998 or 99, one student from Hyderabad, she called me Gauri Rao. She was a final student, final result was declared. And she was crying. I asked what happened, Gauri. She said, I had got 99 out of 100 in accountancy at final level, which was it was a record. Then I thought these are the tears of joy. I then asked, then why? What makes you so well? She said, I got 39 in law. ICAI says, come again. समझा क्या? 1 मार्क का ग्रेस मार्क नहीं दिया जाता. हे 12वी नाही की 32% मिळाले की 35% करून टाकतात. ये नहीं है. 1 मार्क भी काउंट करेगा, 1 मार्क भी सिग्निफिकेंट होगा. And they don't increase it. There is no challenge to it. So you have to be serious now. Just a month is remaining, approximately. Fun है तो वो extra time है. Second one is the ratio chart. Second one is ratio chart. Chart means diagram, or for that matter, it is the logarithmic chart. Logarithmic chart. And the first one is whenever you have only one time series. Whenever you have only one time series with large fluctuations, large variations. In that case, x-axis denotes the time and y-axis denotes log y. Not y but log y. यार काय चाललंय? Y-axis denotes the log y. The third one is the multiple line chart. Multiple line chart. Multiple line chart. When do we use? When there are 2 or more time series. 2 or more time series having same units of measurement. Same units of measurement. So if you are talking about the production, then production in some years at 2022 in tons and 2026 also or 25 also in tons only. Then you can compare. And next one is the multiple axis chart. Multiple axis chart. AXES. AXIS. Axis is singular. AXES. Axis is plural. Whenever there are 2 or more time series. Whenever there are 2 or more time series with different units of measurement. Different units of measurement. Whenever there are 2 or more time series with different units of measurement. Clear? That is the first type of diagram called the line diagram. Now, the one thing that you have to notice here is that this is for the raw data. This is for raw data. This is for the raw data. And it is a one-dimensional diagram. क्योंकि तुम सिर्फ पॉइंट प्लॉट करते हो तो हाइट देखते हो ना कहाँ करना है. So it is one-dimensional.
Second one is the bar diagram. Second one is the bar diagram. Second one is the bar diagram. Now, in that bar diagram, the first type of diagram is simple bar diagram. Simple bar diagram. And the next one is the multiple bar diagram. Multiple bar diagram. And the third one is divided bar diagram or percentage bar diagram. Percentage bar diagram. Now, when do I use the simple bar diagram? We use the simple bar diagram when there is only one time series. When there is only one time series. कितना आसान है देखो, एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना बहुत सिंपल होता है क्योंकि उतने ही पॉइंट्स लिखना है जो एग्जाम में आ सकते हैं, उतने ही पॉइंट्स लिखना है जो आईसीआई के क्वेश्चन सेट में है जो मेरे को पता है. All right. And here x-axis will denote time and y-axis will denote the height, and that height will be the y value. जितनी y value है उतने height का बार निकालो. That width does not matter, okay? बार निकालो. Width has no significance. सिर्फ height. Height means y value. Whenever there are two or more time series, whenever there are two or more time series, यहां क्या होता है, comparison between the time series is possible. Comparison between the time series is possible. Comparison between the time series is possible, but relation with total is not possible. Relation with total is not possible, and therefore यहां भी वही है टू और मोर, बट यहां कंपैरिजन भी पॉसिबल है. कंपैरिजन विद टोटलिटी इज ऑल्सो देयर. तो ये लिखो, यहां कंपैरिजन बिटवीन द टाइम सीरीज इज पॉसिबल एंड कंपैरिजन विद द टोटलिटी इज ऑल्सो पॉसिबल. काय होते फिर फटका दे. किती गेले मग मार्क? आणि नाही आलेले? I know only one student so far who has got all the questions yesterday correct. Right? How anybody else who is sure of getting 45 or above? Fantastic, I'm happy. Very nice. Very good. 40 to 45. थोड़ा इंप्रूव करो, थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करोगे तो 300 क्रॉस कर सकते, समझा ना? पण those who are getting passing should always keep in mind कि ये फाउंडेशन में 300 वाला और 200 वाला ये इंटरमीडिएट में एक ही क्लास में होते हैं, तो कोई नुकसान नहीं है. बर का कंपैरिजन मत करो. दिस इज द ओनली एग्जामिनेशन. एक मिनट. CA is the only course where competition is not there. You study, you pass with whatever percentage you pass, you go to the next level,
eventually you become a chartered accountant. I know a student, Arun Giri, who is a big shot now. Now he has started his own company. That Arun Giri, he was the student of 1998 batch. I can call him anytime. He is either in Pune or Mumbai. One who was on the TV during the corporation election exit polls. Various channels used to call him. शुरुआत कहाँ से हुई? Those years, it was the foundation used to be after 12th standard. So students used to be available for the whole year and they were focusing only on foundation. So for many years, till 2005, whenever any election, corporation, parliament or assembly, we used to the exit poll. We used to take the ballot boxes to the polling booths. Students used to stand there. First, they had to approach the collector because that collector is the polling officer. And they used to take a written permission from the collector's office that this is allowed. उस जमाने में कोर्ट ने इतनी ज़्यादा restrictions नहीं डाली थी इसके ऊपर, सारी सिस्टम के ऊपर. तो he used to do that. And we used to bring all the ballot boxes into the academy. We had only in Indulali, ये नहीं था. So we used to do the whole analysis sitting almost throughout the night. We used to publish not only who will win, but also approximately how many votes each of those major candidates would get. And in the morning of the next day, we used to have a press conference and we used to publish those results. शुरू में पहली बार किया तो कोई चालू नहीं. The press reporters did not take an interest. Second time only Ajka Anand reported it. And third time when we did that for some other election, we had that from Times, we had that from Indian Express, almost all the leading Sakar, Maharashtra Times, everything. So he was inspired from that. Story about Arun is that he cleared foundation with .50%, 200 marks. बरं का परीक्षेच्या आधी आला, नमस्कार केला, म्हणलं सर पास होईल एवढं आशीर्वाद द्या, पास झालं म्हणलं. मग 200, इंटरमिजिएट 300, फायनल 400, पास एक्झॅक्ट डॉट इट्स अ हिस्ट्री. एक पण मार्क जास्त नाही बरं का. तर त्याला मी बोलतो, गंमत आहे का त्याची. आणि मग पुढे ही साईड तोपर्यंत तो इन्स्पायर झालेला होता हे सगळं करून, एक्झिट पोल वगैरे. देन ही वेंट टू चेन्नई for the media journalism. Now a chartered accountant in media journalism. There was only one case till then whose name was Pranav Dua. Now you guys will not know, he was a very popular person. But he went there. When he completed 3 semesters out of the 4 of that course at Chennai, till that time Mr. Chidambaram had become the finance minister. And Arun was told to take his interview. बरं का, ऐका जरा, inspiring story, some confidence boosting story, morale boosting story. So he went to Chidambaram. Arun started asking the questions. Chidambaram, after 2-3 questions were asked, he asked by qualification, who are you? And Arun said, I am a chartered accountant. Then Chidambaram said, can we postpone the interview? I'll collect the data first of all. I will know what the facts are and then I will give you an interview. The ordinary person, ordinary reporter taking interview, chartered accountant taking interview. There was a massive difference. Finance minister of the country postponed the interview. आणि मग आता अरुणने त्याची स्वतःची कंपनी सुरू केली आहे. Now he does this exit poll at the professional level. And I tell you, ऐका त्याची स्टोरी बरं का. I tell you, Chandrakant Patil, who was looking after the Pune Municipal Corporation elections, BJP leader, he telephoned Arun before the election. You carry out the survey. And Arun said, but I'll be charging a lot, massively.
Chandrakant Patil asked him, how much, what charges will you take? I will not disclose the number, but Arun told him this much. And within 2 hours from that, 50% of that was in the account of Arun. And Mr. Chandrakant Patil, he told after Arun gave him the results, I mean, what can happen? He said, I'm surprised. Arun asked why. He said, because anti-incumbency factor will be there, that's what we feel. Means till then, BJP had won the parliament election in Pune constituency, assembly, all the seats in Pune, this thing. So he said, I'm doubtful about it because the people's mandate may go against it. इकडे बघा, काय तुम्हाला कशाचंच काही सिरियस नाही, हे तुम्हाला मोटिवेट करायला मी सांगतोय. And Arun said, no, you are going to have almost all the seats in Pune corporation, whatever, BJP. And Mr. Chandrakant Patil then got a sigh of relief. And he told, if this happens, then I will be happy to give you the contract for the next 5 years. Wherever election is there, local body to this thing. And it happened. Almost all the seats were won. Why almost? All the seats were won by BJP in that, in Pune constituencies. So this is how, starting from foundation, one can go to that level. But for that, number one, you have to have the inner, that कहते हैं ना कि जो instinct होना चाहिए, वो होना चाहिए, and proper guidance होना चाहिए. Even before doing these surveys at the professional level, he used to call me every time. Now what can be done? Now what can be done? I used to tell him the statistical tools. बरं का? This I am ready to share with you. मी आता आपण गंमत करतो, काहीतरी चावटपणा करतो, but that is only just to develop the bonds with you all. Actually, it has to be converted into the professional success. First academic success, then professional success. तो इस एंगल से इसके तरफ देखो कि 200 मिला तो भी चलेगा, बट किसी भी हालत में क्या था, नाहीच अभ्यास झाला तर काय, पास नहीं हो गए, मग बघू नंतरचा अटेम्प्ट, सितंबर अटेम्प्ट, ऐसा मत बोलो. 200 से पास होना है, जितना जल्दी निकल सकते हो ना इसमें से वो निकलो. कितने मार्क्स से निकलते हैं दैट इज नॉट इम्पॉर्टंट. बघू सप्टेंबरला, मग म्हणायचं मी सप्टेंबरला खूप अभ्यास करीन, मग मेरिटमध्ये येईन. इट्स ऑल फॉल्स. If you come to me after the results, sir, I have failed, then I will just try to sympathize you. I just say no, nothing. एक कागज का टुकड़ा जिंदगी का फैसला नहीं कर सकता है वगैरह वगैरह. बरोबर ना? पण escape with narrow escape is also fine. 200 के साथ निकलो, no problem. जिसका स्कोर करना चाहते हैं, कर सकते हैं, ऑफ कोर्स दैट इज वेलकम, बट फर्स्ट ऑफ ऑल पासिंग. इसलिए प्लानिंग करो. मिनिमम 60 इकोनॉमिक्स, मैथ्स, दैट विल कवर 40 ऑफ अदर 2 सब्जेक्ट्स. बस अपने को इतना ही चाहिए. एंड एडिशनल व्हाट यू गेट इज अ बोनस. इस एंगल से उसके तरफ देखो. कल की टेस्ट कैसे गई, तुमने प्रिपरेशन किया था क्या, दैट रिजल्ट विल स्पीक अबाउट. बट पहले ये क्वेश्चन खुद को पूछो, डिड आई स्टडी, डिड आई सरेंडर, डिड आई रिमेन एब्सेंट फ्रीक्वेंटली. ये कभी ना कभी आपको खुद को, क्योंकि ये तुम्हारे ओन करियर के लिए है. वी डोंट एक्सपेक्ट, योर पेरेंट डोंट एक्सपेक्ट अ सिंगल पैसा फ्रॉम यू. योर टीचर्स एनीवे डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू. is for you. Come on. ये लिखा, ये दोनों पॉइंट्स लिखा कि comparison between the time series is possible and relation with the totality is also possible. Now remember, here the one point is that this is a 2-dimensional diagram. Anyway, there is a height, na? But whatever it is, width is there, so it becomes 2-dimensional. It is a 2-dimensional diagram.
And the second point is that conventionally, for the qualitative data, we draw the horizontal bar diagram. And for the quantitative data, we use the vertical bar diagram. Now this is convention, not much reason is there. I'll give Arun's number here. Some of you, if you are interested, you can talk to him. No problem. First, send a message on WhatsApp, introduce yourself, and take his time. Now he's a big shot now. Giri, Arun Giri. उगेच फ्लट करायला जाऊ नका ते तो आता किमान 40s मध्ये येतो होता कळलं का नाही तर okay start. The third one is the pie diagram. Now this is again comparison between the time series is possible. And relation with totality is understood. Relation with totality is possible. And the third, it is also the two-dimensional diagram. And a very important fourth point is that the central angle is equal to value upon the total value multiplied by 360 degrees. हो गया नाउ ऐसा लिखो कि ये तीनों जो मेथड्स है दे आर फॉर द रॉ डेटा. ये तीनों जो मेथड्स है दोज आर फॉर द रॉ डेटा, not for frequency distribution. All these three methods are only for the raw data, not for the frequency distribution. Now the next method is histogram. Naka bolu. Histogram. This is basically number one for the frequency distribution, and that too for the group frequency distribution.
for the group frequency distribution. Classes. Here, class width is the width of the bar and frequency is the height of the bar. Third, if the classes are of different widths, like 0 to 10, 10 to 50 वगैरह, then the width of bar is the frequency density that we have already written. Now what do you mean by frequency density? बोला ना? Frequency upon class width, class interval, class length, whatever you call. Fourth one, if the midpoints of upper edges of the bar are connected by line segments, then it is called frequency polygon. And if they are connected by a smooth curve, then that is called the frequency curve. Then it is called the frequency curve. Stop talking. Fifth point, this frequency curve can be J-shaped, inverted J-shaped, can be U-shaped, but it can be mixed shape like this. But bell-shaped curve is most frequent. ये MCQ है. Bell-shaped curve is most commonly observed. Is most common for large data sets. All right. Then remember that the abscissa of maximum height gives you the mode. It gives you mode, and therefore histogram gives the mode, ogive gives the median,
but arithmetic mean cannot be found graphically. Arithmetic mean cannot be found graphically. यह MCQ है. Mean cannot be found graphically. And of course we have already written, but I don't mind repeating, that this ogive is the S-shaped curve. ये लिखा है हमने. Ogive is the S-shaped curve. S लिहा, नहीं तो A डबल S लिहा. S काय ये इकडे ये आपण मॅचिंग आहे आपलं. ये आज आपलं मॅचिंग आहे. ये लाईक बॉयफ्रेंड लाईक गर्लफ्रेंड. काय दोघी माझी तेवढी एनर्जी आहे. ते पोह्यांचं काय झालं? काय तू नुसतं बोल. तिकडे करू, तिथे ये ना. मग इथे सुद्धा आहे काय बी सगळं. तुला इथे करायचं इथे करू. अकराच्या मुली बऱ्या तुझ्यापेक्षा. तू फार अगदी बिझी आहे ना एकदम. आय विल ओपन द मॉड्यूल. Come on. Come on. ये सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करो. स्टार्ट नाउ फटाफट. Statistics is defined in terms of numerical data. बोलो. In terms of numerical data. In terms of numerical data. In प्लूरल सेंस. क्योंकि वो न्यूमेरिकल डेटा को बोलते हैं. डेटा वुड बी यूज्ड इन प्लूरल सेंस. The word statistics can be used in both the senses. अरे एक्सप्रेशन द्या ना काहीतरी. बर म्हणा, तुम्ही म्हणता तर तसं असेल. एक मिनिट. The word statistics can be taken in singular as well as plural sense. समझा? But यहाँ they are asking specifically in terms of numerical data. जो डेटा हम कलेक्ट करते हैं दैट विल बी इन द प्लूरल टर्म्स. तो इसका आंसर बहुत नहीं है. इसका आंसर प्लूरल सेंस है. स्टैटिस्टिक्स कैन बी इन बोथ, but numerical data are. Therefore you might have noticed I always say data are. I never say data is, because technically it is wrong, but people very commonly say data is given, data is found. That's wrong. समझा? थर्ड छोड़ दो. हाँ. फोर्थ. Statistics is concerned with. हाँ, here it is both. Attribute is qualitative. Annual income नहीं. डिस्क्रीट कल लिखा है हमने. इनकम इज डिस्क्रीट. एक पैसा एक्सप्लेनेशन भी दिया था मैंने तुमको. एक पैसा हो सकता है, 2 पैसे हो सकते हैं, 1.5 पैसा नहीं हो सकता. ओके. मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट इन एग्जाम्पल इन इज एन एग्जामिनेशन पाहिजे ते. बोलो. मार्क्स क्या कहेंगे? डिस्क्रीट. मार्क्स कैन बी डिस्क्रीट. हाँ, you can get 1.5 marks, you can get 1.25 marks, but you can't go to 1.222223. हाँ, परसेंटेज मार्क्स बोला तो कंटिन्यूस होगा.
बर का, तो कल जो हमने थ्योरी लिखा है वहां लिखो, डिस्क्रीट के अंदर लिखो मार्क्स और कंटिन्यूअस के अंदर लिखो परसेंटेज मार्क्स. परसेंटेज कैन बी 78.333333. परसेंटेज कैन बी 106.4444. हो गया. नेशनैलिटी ऑफ अ स्टूडेंट, ड्रिंकिंग हैबिट ऑफ अ पर्सन, गुड. एज ऑफ द पर्सन, आता हे काल लिहिलंय, तुम्ही काय अभ्यास कर, इज कंटिन्यूअस. ये मैंने इतना भी बोला था, एज कैन बी सेकंड, मिली सेकंड, माइक्रो सेकंड, पिको सेकंड, नैनो सेकंड. तो क्या क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस. डेटा कलेक्टेड ऑन रिलीजन फ्रॉम द सेंसस रिपोर्ट्स, from the census report. So census report will be published by the government agencies and we use that, and therefore it will be the secondary data. The data collected on height of group of students after recording their heights with a measuring tape, primary data. But by the way, more specifically it will be the observation method. समझा ना? ये टेलीफोनिक इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू नहीं है, इनडायरेक्ट इंटरव्यू नहीं है, क्वेश्चनर मेल क्वेश्चनर नहीं है, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन मेथड. प्राइमरी डेटा आर कलेक्टेड बाय, इंटरव्यू वगैरह सगळं. द क्विकेस्ट मेथड टू कलेक्ट द प्राइमरी डेटा. आता एक मिनिट, इट इज द मेल क्वेश्चनर मेथड. ऐका, what is the correct answer? Mailed questionnaire method. But because the choice is not given like that, among the given choices, telephonic interview will be fine. Among the given choices. But काय? एक मिनट. Data collected on height of group of students. I mean, both are correct then. In some sense, हसण्याचं काय आहे? In some sense it is primary and in other sense it is continuous. आता ह्या दोन मध्ये काय, आता असं नाही व्हायला पाहिजे, बिकॉज इट इज प्रायमरी डेटा विच इज कंटिन्युअस डेटा. आता याच्यात ठीक आहे, तुम कंटिन्युअस लिखो, दॅट इज ओके. मोर स्पेसिफिक, कम ऑन. द बेस्ट मेथड टू कलेक्ट द डेटा इन केस ऑफ नॅचरल कलॅमिटी. कुठे रे, तुम्ही काहीच अभ्यास करत नाही, इतकं कसं तुम्ही. नेचुरल कैलेमिटी में वी यूज द डायरेक्ट इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू. करेक्ट ना? इन केस ऑफ रेल एक्सीडेंट, नाउ इट इज द इनडायरेक्ट इंटरव्यू. Which method covers the widest area? Mail questionnaire. बराबर? Mail questionnaire. Amount of non-responses is maximum in mail questionnaire. Some important sources of secondary data are international and government sources. Among the given choices, A is correct, but it could be in addition quasi-government and unpublished data. But ठीक है, A choice is correct. 20. Internal consistency of the data can be checked in. Consistency मतलब क्या? Whether नहीं, थांबा एक मिनिट, जरा ऐका ना जरा. Being correct is check for accuracy and being valid is the check for consistency. आता ये वैलिडिटी समझने का एक तरीका होता है, वेदर द टोटल्स मैच. इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट इज इक्वल टू फॉरेन ट्रेड है कि नहीं है, समझा ना? वेदर द 4 कंपोनेंट्स ऑफ जीडीपी एड टू द जीडीपी. सो whenever 2 or more time series are given, you can check for the consistency because they have to satisfy certain relation which is basic relation.
and therefore in this case I will consider a number of related series are given. तो मेरे पास एक इंपोर्ट की सीरीज है, एक एक्सपोर्ट्स की सीरीज है, एक टोटल फॉरेन ट्रेड की सीरीज है. तो ये सारा टोटल मैच होता है कि नहीं होता है, दैट विल बी वन सेंस ऑफ फाइंडिंग द कंसिस्टेंसी. तो यहाँ जो थेरी कल लिखा था उसमें वो ऐड करो कि कंसिस्टेंसी लिखा था ना हमने, वैलिडिटी, उसके सामने लिखो इट कैन बी फाउंड यू स्टडिंग द नंबर ऑफ related time series, related series. हो गया. Accuracy and consistency of the data can be verified by accuracy and consistency of the data can be verified by, actually scrutiny is the correct. वैसे वो दोनों भी करेक्ट है, इंटरनल एक्सटर्नल, पर इसमें गिवन चॉइसेस में सी चॉइस इज बेटर बिकॉज दैट इज कॉल्ड द स्क्रूटिनी. कम ऑन. मोड ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा आर काय टेक्सचुअल, टैब्युलेशन एंड डायग्रामेटिक. The best method of presentation of the data is tabular. Best method is tabular. Why? Because there is accuracy. Although it has a drawback that long-term trend cannot be found. But accurate method is tabulation. The most attractive method is Then for tabulation, caption is upper part that describes the columns and sub columns. Stub, left part of the table describing the rows. Entire upper part of the table is called boxhead. Units of measurement in tabulation is shown in the boxhead. Actually it is in head note, but head note is a part of the boxhead and therefore it is boxhead. Then tabulation, source of the data will be shown as the footnote. Footnote nahi, footnote. कैसे बोलता? Which of the following statements is not true? Statistical analysis of data requires tabulation. This is true. It facilitates comparison between rows and not columns. This is false because you can compare the two columns as well. Complicated data can be presented by tabulation. True. Diagrammatic representation of data first requires tabulation, which is true. So not true में कौन सा choice आएगा? B. Hidden trend can be noticed in diagrammatic presentation. Diagrammatic presentation of the data can be done by all of these. Yes, सबका मीनिंग वैसे सेम है पर थोड़ा थोड़ा फर्क है. एक मिनट है, स्टॉप टॉकिंग. Pictures is different, diagram and chart is same. Picture is different. बरोबर ना? Like a small child in junior KG is taught A for apple, B for bat. मग आता you teach your children A for Aishwarya, B for Bipasha, S for Sunny Leon. मग तो सनी लिओनचं पिक्चर बघितलं की ते म्हणेल, हा मम्मा, डॅडी कीप्स ऑन लुकिंग ॲट दिस एव्हरी डे. काय 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 माझं काय ऍक्शन? ओके. मोस्ट accurate mode of data presentation is tabulation. Chart that uses logarithm is the ratio chart. Multiple line chart for 2 or more time series when the variables are
in the same units. Multiple access chart is considered when units with lot of variations. Horizontal diagram, bar diagram is used for qualitative. The vertical bar diagram is used for quantitative. Divided bar diagram is considered for comparison also and relation with totality also. समझा ना? Yes or no? तो क्या लिखेंगे? A and B both. In order to compare two or more time series, we consider multiple bar diagram. कुठला? कुठे? 38. Vertical bar diagram is applicable when data vary over the time. ये correct है, but that is for quantitative data. ये more correct है, more specifically correct है. क्वालिटेटिव के लिए हॉरिजॉन्टल और क्वांटिटेटिव के लिए वर्टिकल, ये हमने लिखा है. कळलं ना देव? ओके. अभी कौन सा है? 40. इन ऑर्डर टू कंपेयर टू और मोर रिलेटेड सीरीज वी कंसिडर मल्टीपल. हो गया. पाई डायग्राम कंपैरिजन इज ऑल्सो पॉसिबल, रिलेशन विथ टोटलिटी इज ऑल्सो पॉसिबल. तो कौन सा चॉइस बोला कि हाँ. अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पाई डायग्राम इज फॉर ए चॉइस ना. हे बघा, ये क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस है कि जहां दो दो चॉइसेस करेक्ट है, बट यू हैव टू सर्च फॉर व्हाट इज मोर करेक्ट, व्हाट इज मोस्ट करेक्ट. In general, yes, it is correct for quantitative, but in particular, it is for this kind of data. Pie diagram, समझा ना? Frequency distribution arranges in terms of, बोला कि बोला क्या लिखूं? बरं चला एक एक वेरीफाई करो. अरेंजेस ऑब्जर्वेशंस एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर. ट्रू, क्योंकि हम ऐसे ग्रुप्स करते हैं ना 0 to 10, 10 to 15 वगैरह. हाँ. अरेंजेस ऑब्जर्वेशंस इन द नंबर ऑफ ग्रुप्स. ट्रू, क्लासेस करते हैं. रेफर्स टू मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक. ट्रू. सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. समझा ना? अरे क्वालिटेटिव डेटा के लिए निकाल सकते हैं क्या तुम? नहीं, क्योंकि क्लासेस कैसे करेंगे? रेड टू ब्लैक ऐसा तो नहीं हो सकता है ना. कैसे माहिती तुम तो. हाँ. अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटिन्यूअस वेरिएबल इज कॉल्ड ग्रुप फ्रीक्वेंसी. डिस्क्रीट मतलब अनग्रुप आणि ग्रुप मतलब कंटिन्यूअस. बट रिमेंबर, ये ग्रुप के अंदर दो पार्ट्स है, इंक्लूसिव, exclusive. Inclusive classes are called non-overlapping. 0 to 9, 10 to 19. So 9 and 10 they don't overlap. But exclusive, exclusive classification is called करो. Distribution of shares is an example of the frequency distribution of discrete variable. क्योंकि तुम्हें एक शेयर मिलेगा, 100 मिलेगा, पर 100.5 शेयर्स कैसे मिलेंगे? तो डिस्क्रीट. Distribution of profits of the blue chip company relates to. Here I will make it continuous because big company है, तो जो कुछ भी प्रॉफिट होगा that will be a big number. So there 0.5 में वगैरह ऐसा नहीं जाएगा, 0.25 में. So I will consider that as continuous. हे बघा, आता काय आहे, त्यांनी स्पेसिफिकली ब्ल्यू चिप कंपनी म्हटलंय. So the profits will be distributed in the large amount. Their points will not be important.
So if given a choice, I will mark continuous. क्योंकि blue chip लिखा है, सिर्फ profit लिखा होता तो I would have said both A or B. समझा ना? But here I will mark continuous without referring to what answer is given by Cliff. वो मत देखो, क्योंकि उससे तुम तुम्हारा थिंकिंग ये मत करो, मोल्ड मत करो. म्युच्युअली एक्सक्लुसिव क्लासिफिकेशन म्हणजे काय? क्या होगा? म्युच्युअली एक्सक्लूसिव का बेसिक मीनिंग क्या है? अरे एक्सक्लूसिव क्लासेस, बराबर ना? अरे एक्सक्लूसिव क्लासेस मतलब क्या? 0 to 10, 10 to 20. हाँ, मतलब इसमें क्या होता है? एक्सक्लूड अपर लिमिट बट इंक्लूड लोअर लिमिट. क्योंकि 0 to 10, 10 to 20 में 10 will belong to 10 to 20. 10 will not belong to 0 to 10. So it excludes upper limit and includes lower limit. समझा ना? Mutually exclusive classification is used for continuous. क्योंकि जब तुम 0 to 10 कहते हो तो 5.666666 भी तो 0 to 10 में ही आता है, तो इट इज फॉर कंटिन्यूअस. एंड बेसिकली हमने लिखा है ना दैट एक्सक्लूसिव क्लासेस हो या इंक्लूसिव क्लासेस हो इज कंटिन्यूअस. म्युच्युअली एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन इज यूजुअली मीन फॉर, ते झालं ना आता. This is also for continuous ना. Basically group frequency distribution is a continuous frequency distribution and discrete frequency distribution means ungrouped. तो ये दोनों का भी आंसर सेम ही है. अभी LCB is लोअर क्लास बाउंड्री. LCB का मतलब क्या? लोअर क्लास बाउंड्री. इट इज डिराइव फ्रॉम लोअर क्लास लिमिट, बराबर ना? अरे 0 to 9, 10 to 19 में 0, 9, 10, 19 these are the limits. After conversion minus 0.5, 10 point काय 9.5, 9.5 to 19.5, these are the boundaries. So lower boundary is derived from lower limit, upper boundary is derived from upper limit. 51. Length of the bar is. Length of the bar is. It's a good question. क्या कहेंगे? हाँ? बोथ नहीं, A और B. A और B. हे बघा, if the given classes, एक मिनट, stop talking. If the given classes themselves are exclusive, try to understand. If the given classes are exclusive, 0 to 10, 10 to 20, then what are limits are nothing but boundaries. समझा ना? And if the given classes are inclusive, 0 to 9, 10 to 19, then you have to convert them to exclusive. So original ones are limits and converted ones are boundaries. तो exclusive classification में you can write upper limit minus lower limit, but inclusive में you have to consider specifically upper boundary minus lower boundary. तो I prefer A or B depending upon what type of classes are given. काय होते तेजल बघ की त्याच्याकडे कुठे आहे पुस्तक? अगं मग तिथे मग कसं ते करणार? तिथे घे चेअर. मग तू कसं बघते? मग दिसतं का? पण हो गया क्या बाळांनो? हाँ. फॉर पर्टिकुलर क्लास बाउंड्री less than cumulative frequency and more than cumulative frequency add up to many times I develop a feeling that taking so much of extensive revision is worthless. तुम पढ़ाई करते नहीं, तुम
पढ़ के आते नहीं है। कल हमने स्पेसिफिकली लिखा है कि less than cumulative frequency and more than cumulative frequency of the next class they add up to total frequency. ये लिखा है कि नहीं? काही तुम्हाला येत नाही. Come on. Frequency density is equal to. Frequency density is equal to. बोला. हाँ. क्या? It's a ratio between what and what? Frequency and the class length. Relative frequency is equal to. Relative frequency is equal to. It lies between what and what? So relative frequency is probability. It lies between 0 and 1. Mode of the distribution can be obtained from histogram. Median can be obtained from less than type of हो जाए. हाँ मग तो चॉइस जास्त बरोबर आहे ना. Lies between 0 and 1 both inclusive. B choice is more correct. A choice is correct but B choice is more correct. कारण किसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 भी हो सकती है और किसी एक ही क्लास की फ्रीक्वेंसी इक्वल टू टोटल फ्रीक्वेंसी है तो वो 1 भी हो सकता है. बोथ इंक्लूसिव. गुड. पुढे कुठे आलो आपण आता? मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन कॅन बी ऑब्टेन फ्रॉम लेस देन हो जाए. Comparison among the class frequencies is possible in. Comparison between the frequencies is possible in. बोला की काय झालं? अरे मग बावळटांनो तुमच्या मोबाईलवर तुम्ही हा चॅप्टर उघडा ना. सगळं सांगायचं. Anyway, we are discussing only, na? So if you have the question bank, the exercise in front of you, your job is done. You don't have to look at the screen at all. We are just discussing. आता ते चार्ज कर. 1 तास आपण थांबू मग तू ते उघड. इथे बघ मोठा स्क्रीन हो गया क्या? कम ऑन. कहा तो काय है हम? कंपैरिजन बिटवीन द क्लास फ्रीक्वेंसीज इज पॉसिबल इन हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. समझा ना यारे? हो कि नहीं? Histogram is the first step, and when the midpoints of the upper edges are connected by line segments, it becomes a frequency polygon. This A or B is correct. Frequency curve is limiting form of काय? कोणता क्वेश्चन? काय? Hmm. 58. Frequency curve is limiting form of frequency polygon. क्योंकि frequency polygon लाइन सेगमेंट से किया है, अभी उसका अप्रोक्सीमेशन होगा फ्रीक्वेंसी कर्व से. हाँ. Most commonly used frequency curves are bell shaped. The distribution of profit of the company follows. Distribution of profits of the company follows. It can be any of these, ना? यारे हे बघा, शुरू में कम प्रॉफिट हुआ है, फिर वो बढ़ता गया. जे शेप पॉसिबल. शुरू में ऑपरेशन स्टार्ट किया, लॉसेस प्रॉफिट कम हुआ, एक्सपर्टाइज डेवलप, इसको लर्निंग कर्व कहते हैं. काय? तो लर्निंग कर्व पे आप होते हो जब बिजनेस शुरू करते हैं. एक बार इनफ आपका एक्सपर्टाइज आ गया तो फिर वो प्रॉफिट बढ़ना शुरू होता है. इट विल बिकम यू शेप्ड.
Initially, it went on increasing, went to the peak, and then started falling down, bell shaped. So it could be any of these. समझा ना? Good question. आता पहला और दूसरा, दूसरा किया है क्या तुमने कल होमवर्क? सेकंड क्वेश्चन किया है क्या? नसेल तर परत करा. करो. करो बायांनो. सेकंड क्वेश्चन दोबारा करो. काय करते तेजल? काय? अगं मग लेक्चर सुरू करना है ऑनलाइन. हो गया क्या बाद नो? क्या क्या टैब्युलेशन का क्वेश्चन मी करूं काय उपयोग नाही. एनीवे यू कैन नॉट सी इट. हे बघा तुम कैसे करेंगे. एक मिनट स्टॉप टॉकिंग. हाँ क्या करेंगे. कॉफी ड्रिंकिंग नॉट ड्रिंकिंग ये एक हो गया. मग मेन एंड वुमेन ये दूसरा हो गया फैक्टर. सो जेंडर इज द वन फैक्टर, कॉफी ड्रिंकिंग इज द अदर फैक्टर. इट इज अ टू वे टेबल. समझा? अभी बिकॉज दे आर टॉकिंग इन परसेंटेज, टोटल नंबर विल बी कंसिडर्ड टू बी 100. टोटल नंबर विल बी कंसिडर्ड टू बी 100. मग 100 में वुमेन का टोटल है 40 तो मेन का टोटल है 60. कॉफी ड्रिंकिंग का है 45 तो नॉट ड्रिंकिंग का है 55. टोटल्स मिल गया. अभी क्या दिया है. मेल कॉफी ड्रिंकिंग वॉज 20. एक नंबर पता है तो बाकी का टेबल पूरा करो. समझा ना? मग काय आता है आंसर. फीमेल नॉन कॉफी कितना आता है 15. 15. करो तीसरा क्वेश्चन. Cost of sugars are given. What is the difference between central angle? What is central angle? Value upon total value into 360. अभी यहाँ हाईएस्ट वैल्यू है 35, टोटल है 90. So 35 upon 90 into 360. So that will come out to be 140. And smallest value is 12. But 12 upon 90 into 360 will come out to be 48. तो 140 minus 48 92 आता है क्या. डिग्रीज में होता है क्या वो. ठीक है. इट्स अ गुड क्वेश्चन. आसान क्वेश्चन है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट. बोला फोर्थ क्वेश्चन. 3 और लेस मतलब क्या करेंगे. 3 और लेस. यार काय तुम्ही बडबड करताय. इतके सोपे क्वेश्चन था. 3 और लेस क्या करते बोलो. अरे एक तो ऑनलाइन लेक्चर स्टार्ट करो, नहीं तर मग वो एक्सरसाइज निकालो मोबाइल पे. इफ यू कांट सी द स्क्रीन. बोला ना 3 और लेस में क्या क्या आएगा. 15 प्लस 19 प्लस 22 प्लस 31. 87 is not important. 15 plus 19 plus 22 plus 31. This is important. Come on. More than 1500. तो 1500 के ऊपर कितने हैं 43 ना. बट उन्होंने परसेंटेज बोला है
तो टोटल क्या है? मग 43/86 into 100. Percentage is number upon total number into 100. तो कितना आया? 50%. हाँ, ये 6th and 7th हमने ऑलरेडी किया है, बराबर ना? Below मतलब take the differences in downward direction, and above means take the differences in the upward direction. समझा ना? सेट सी छोड़ दो. समझा क्या नहीं समझा? हाँ, मत करो. एडिशनल क्वेश्चन बैंक. ग्राफ इज line diagram. Details are shown by yes, charts and table. Relation between two variables is shown in बोला कि relation between the two numbers is shown by either a bar diagram or multiple line diagram. ऐका रे जरा. बार डायग्राम और मल्टीपल लाइन डायग्राम. बार डायग्राम में भी मल्टीपल बार डायग्राम और डिवाइडेड. मोर स्पेसिफिक आई एम टेलिंग यू. तो इट कुड बी मल्टीपल लाइन चार्ट, इट कुड बी मल्टीपल एक्सेस चार्ट, इट कुड बी a multiple bar diagram, it could be a divided bar diagram, it could be a pie chart, pie diagram. समझा ना? It could be any of these, but among given choices what would you accept? Bar diagram. In general, number of types of tabulation is 3. One-way table, two-way table, three-way table. Number of the errors in statistics we'll see later on in sampling chapter. Number of frequency distributions is कोणतं? Come on. Class frequency upon the width of the class is density. Tally mark determines frequency. जितने tally marks होते हैं उतनी frequency होती है ना? हाँ. Cumulative frequency distribution is Let's सोडून द्या. All the choices are ridiculous. छोड़ दो. The frequency distribution is a distribution of numbers, ना? Frequency distribution is what? Distribution. Very important person. VIP is what? A choice. Person. Person. Intelligent is what? Boy. Obvious, ना? Synonyms आहेत ना ते. To find the number of observations less than any given value, we find cumulative frequency. Area diagram it's either the histogram or the frequency polygon, but among the given one it is. तो ये choices are wrong. Area diagram असे एक तर काही नसतं. Diagram representing the area can be found in what? That can be found in frequency polygon. So असले काही क्वेश्चन्स कधीच येणार नाहीत पेपर मध्ये. When all classes have same common width, width same है, तो क्या निकालते हैं? बोला. Do you use the pie diagram for the frequency distribution? For frequency distribution, we use only histogram.
So it could be histogram, it could be the frequency polygon, but surely it cannot be a pie chart. Pie chart, bar chart, line chart, these are only for raw data. समझा ना? हाँ, ogive is लाइन डायग्राम. क्योंकि तुम क्या करते हैं, पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं, लोअर अपर लिमिट ऑफ द क्लासेस विद द लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को पॉइंट्स, और पॉइंट्स को लाइन सेगमेंट से मार्क करते हैं ना, कनेक्ट करते हैं. तो लाइन डायग्राम. अनइक्वल width of the classes do not cause any difficulty in construction of histogram ना. अरे unequal असलं तर we use x width as the frequency density. तो histogram में कोई फर्क पड़ता नहीं है. पहले histogram निकालते हैं ना, तो हिस्टोग्राम निकालने के बिना तुम एक बार हिस्टोग्राम निकालो तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन विथ फॉलोज इट ना. आता काय बरं का, एक मिनट, पेपर्स भी निकाल के देखो. ये ऐसे चॉइसेस जो होते हैं कि जो आता पहले ये मग वो, यू आर गोइंग टू वाव क्लास और यू आर गोइंग टू प्रेस्टीज, ऐसे दो चॉइसेस अलग दिया तो क्या करेंगे, बरोबर ना. ऐसा चॉइसेस है, both are correct. Approximate idea of the shape of frequency curve. Frequency curve is determined from frequency polygon ना. ए अरे कसं तुम्ही करू, पहिले फ्रीक्वेन्सी पॉलिगॉन निकालते हैं, फिर म्हणून हे क्वेश्चन पेपर मध्ये येण्यासारखे नाहीत, हे चाइल्डिश क्वेश्चन्स आहेत. फक्त तुमच्या कन्सेप्ट त्याच्यात क्लियर होत आहे कि पहले तुम हिस्टोग्राम निकालते हैं, फिर अपर एजेस को कनेक्ट करके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन निकालते हैं बाय सेगमेंट, फिर उसका अप्रोक्सीमेशन करते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व. समझा ना. आता हे काय क्वेश्चन आहे का बघा, वर्टिकल चार्ट में अपीयर समवॉट लाइक. आता मी सांगतो तेवढेच क्वेश्चन करा, काय यातले. Just do few questions. $29 बोलो. Frequency density is used in construction of histogram. Cumulative frequency refers to both. हाँ. Come on. Question number 5050. 50. For the overlapping classes 0 to 10, 10 to 20, which are exclusive classes. So mid value is equal to what? 0 plus 10 upon 2, which is 5. काय होते वेदांत, काय चाललंय. अरे मी काय माझ्यासाठी चाललाय का अभ्यास हा. करा. 51, 52, 53, 51 चा आन्सर काय. इट्स अ गुड क्वेश्चन एक्चुअली. क्या बोलेंगे. 0 to 19 का उनको क्या चाहिए,
मिड वैल्यू, तो क्या करेंगे? It will be minus 0.5 to 19.5. So minus 0.5 plus 19.5 upon 2. ये इंक्लूसिव क्लासेस है, कन्वर्जन के विदाउट दैट यू कांट डू एनीथिंग. तो क्या आंसर आया? अलग का 52, 22, 30, 5 plus 8, 13 plus 5, 15, 28. करा था 53. Ogives can be two types. करा 54. X coordinate and the upper limits of the class intervals. बोला. And y coordinates are the cumulative frequencies. बोलो. अपर लिमिट के लिए ये क्या होता है? हो जाए, बट मोर स्पेसिफिकली लेस देन हो जाए. करेक्ट. ये एक क्वेश्चन देखो 56. हिस्टोग्राम द क्लासेस आर टेकन ऑफ ओवरलैपिंग. क्योंकि नॉन ओवरलैपिंग है तो वो दोनों कनेक्ट ही नहीं होंगे ना. तो इट शुड बी दिस गुड क्वेश्चन ओवरलैपिंग. ये आपने नोट्स में लिखो. हिस्टोग्राम निकाला है कि नहीं? लिखा है कि नहीं? तो हिस्टोग्राम में लिखो कि इट कैन बी ओनली फॉर द एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग क्लासेस. ये अपने नोट्स में लिखो. इट कैन बी फॉर ओनली द एक्सक्लूसिव और ओवरलैपिंग क्लासेस. समझा? 57. Overlapping class intervals, class limit and boundary, class limit and boundary same. ते सुरू झालं का परत? झालं. Classification is of two types. Finish. समझा? Is that clear? यार काहीतरी बोला ना. कौन था? क्लासिफिकेशन इज ऑफ टू टाइप्स. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव. टू टाइप्स. हो गया? चुकीचं आहे ते. यू हॅव टू हॅव अ बिलीफ इन यू ना. एनीवेअर डिड फोर टाइप्स कम इन पिक्चर? नो. इन्क्लुसिव्ह एक्सक्लुसिव्ह दोही आहे. हे बघा त्यांनी आन्सर काय दिले ह्याच्यातनं कन्फ्यूज होऊ नका. व्हॉट इज कन्व्हिन्सिंग यू, स्टिक टू दॅट. एक मार्क कम हो गया तो भी चलेगा, लेकिन आई स्टिक टू व्हॉट आई एम कन्व्हिन्स विथ. या तो कॉन्फिडन्स पाहिजे ना. काय काय बोल. होऊ शकत नाही, कारण ज्याला 39-40 पडतायत ना त्याला एवढा कॉन्फिडन्स कधीच नसतो. त्याला स्वतःचा थॉट कधीच नसतो. दिस इज फॉर अप्पर. त्याच्यात मुली बसतच नाहीत, ते मुलांसाठी. ठीक है. I think we will take sampling then tomorrow. एक तो screen is not working, attendance is that. Sampling we will start tomorrow. No problem.